यार बस सर झुका के मेहनत करते रहो, आपकी बारी ज़रूर आएगी, किस्मत भी आपकी चमकेगी, बट तब तक मेहनत करते रहो। हाय एवरीवन, दिस इज सौम्याजित दिस साइड। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे मेरे प्रोग्रामिंग जर्नी के बारे में, राइट from the time when I got a 6 GPA in DSA till cracking all the big product tech companies that you have already seen in the thumbnail and then some. Definitely it's an interesting journey for me, as well as it's a difficult one to share. Here I have talked about a phase in my past where I really doubted myself, I really doubted my potential. मेरे को ये तक लगने लग गया था कि शायद मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है ये ब्रांच सेलेक्ट करके। आई हैव टॉक्ड अबाउट दैट फेज इन माई लाइफ where there was a huge amount of uncertainty as well as a sense of responsibility आपके कंधों में। If you are facing this uncertainty, अगर आपको भी डर लग रहा है या कहीं ना कहीं आपके अंदर भी ये क्वेश्चन है कि यार कैसे होगा, हाउ विल आई डू ऑल ऑफ दिस, फिकर नॉट, watch this video till the end. I can assure you my experiences, how I went through that and came ahead smiling, will definitely inspire you to work hard and achieve history. Like कर दो यार इस वीडियो को, बहुत मेहनत से मैं और भी अच्छे कंटेंट आपके लिए लेके आऊंगा। लाइक टारगेट 1,500 लाइक्स रखते हैं, तो फटाफट लाइक करके शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। So without further ado, let's get started. So everything started from the second year of college. क्योंकि just like any other college, in the first year we did not do anything. There was literally no one to guide us. कोई प्रोग्रामिंग कल्चर था नहीं कॉलेज में, तो हमने फर्स्ट ईयर तो मजे मार के पूरा काट दिया। We did not literally do anything in our first year. From second year, branch specific studies start. So we entered our second year and we got introduced to this world of data structures and algorithms, and we were literally blown away and mesmerized by it. For some reason, I don't know why, but I did not do good in data structures and algorithms. And इतना ज़्यादा कि each and every day कॉलेज से आके जब मैं अपने हॉस्टल रूम में घुसता था, मैं यही क्वेश्चन अपने आप को करता था कि क्या मैंने गलती कर दी ये स्ट्रीम लेके। इतना ज़्यादा मैं एक नेगेटिव हिट स्पेस में चला गया था उस समय कि आई यूज्ड टू क्वेश्चन दिस ईच एंड एवरी डे। और प्रॉब्लम यह है कि आप उस समय ऐसे फेज में होते हो अपने लाइफ के कि आप किसी से ये बात शेयर भी नहीं कर सकते। आप बाहर रह रहे हो, अगर आपने ये सारी बातें अपने पेरेंट्स को बता दी, देन यू एड एडिशनल टेंशन ऑन देम। एंड लिटरली स्पीकिंग, मैं नहीं चाहता था कि मेरे वजह से उनको टेंशन हो, तो मैंने उनसे भी बात नहीं करी। आप अगर एक मिडिल क्लास फैमिली से आ रहे हो तो इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती है, और उस समय अगर चीज़ें नहीं जा रही है आपके फेवर में, चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, बहुत बुरा लगता है। टू बी फ्रैंक, मैं कभी भी एक ब्रिलियंट किड नहीं था। आई वॉज नेवर दैट जीनियस, आई वॉज नेवर दैट ब्रिलियंट हु जस्ट हैड इट फ्रॉम द गेट गो। Anything and everything that I have achieved, anything and everything that I got, I had to work very very hard for it. और जब आप इतनी मेहनत करते हो और फिर भी आपको रिजल्ट नहीं मिलता है तो बहुत बुरा लगता है यार। And that is exactly what I was facing in my second year. But one thing that I would say, probably I will at this point in time, looking at my hindsight, I will never trade those months, I will never trade that year for anything. Because that is what probably built my character, because that is what built my outlook towards computer science as a field. And it's for anyone and everyone who is facing this situation, be it in your job, be it in your studies, no matter what, doesn't matter where you are facing this situation, because this is a very common situation that anyone can face. The only thing that I have to say is this too shall pass. यार बस सर झुका के मेहनत करते रहो, आपकी बारी ज़रूर आएगी, किस्मत भी आपकी चमकेगी, बट तब तक मेहनत करते रहो। वट एवर इट इज़, हाउ एवर लिटिल आई हैव गॉट। एक चीज़ मेरे को पता है, उसमें लक का तो ऑब्वियसली देयर हैज़ बीन अ ह्यूज रोल, बट लक हमेशा आपको साथ नहीं दे सकता। इट माइट फेवर यू फॉर वंस, इट माइट फेवर यू फॉर ट्वाइस, बट नॉट मोर देन दैट। बस आपको मेहनत करते रहना पड़ेगा ताकि आप अपने किस्मत को भी वो चीज़ दे
कि वो आके आपकी मदद कर सके. And that is what I followed. I took this situation and faced it head on. Instead of lying there and not doing anything or accepting the fact that I am not cut out for it, I took this opportunity and challenged myself as to why is it that I will not be able to do. If someone else can do it, so can I. अगर कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता? And I said it to myself कि मैं ये करके दिखाऊंगा. No matter what. What I am saying is that even if you are facing this, even if आपको अभी लग रहा है कि आपने शायद गलती कर दी या आप शायद कंपनी स्विच नहीं कर सकते या नहीं कर पाएंगे, फॉर ऑल ऑफ यू गाइज पुश अवे दोस नेगेटिव थॉट्स यार. और आज से शुरू करते हैं जो मैंने भी करा था, एक गोल ओरिएंटेड अप्रोच लेने का टू स्टडी programming, to improve in DSA and to improve in anything for that matter. Let's take a goal to become better in DSA, to become better in problem solving, to become better in a technology whatsoever, to become better in development and so on and so forth, whatever it is that you are doing. And comment down below the goal that you have, and then comment down below the things that you need to do in order to achieve that goal. Take those things one after the other and break it down into smaller achievable targets in order to fulfill your goals. For example, मेरे को खुद बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते थे. डीपी में प्रॉब्लम होता था, ग्राफ में प्रॉब्लम होता था और कई सारे डेटा स्ट्रक्चर्स में प्रॉब्लम होता था. सो आई टुक इट अपॉन माई सेल्फ, क्रिएटेड अ गोल टू बिकम बेटर एट DSA, ब्रोक द टास्क्स डाउन फर्दर एंड एडेड दो स्टेप्स कि व्हाट ऑल थिंग्स आई नीड टू डू इन ऑर्डर टू बिकम गुड इन DSA. एक बार मैंने ये सारे टास्क एक एक करके लिख दिए, उसके बाद मैंने एक एक टास्क उठाया, एक एक स्टेप उठाया और उसको फर्दर ब्रेक डाउन किया कि इफ आई नीड टू बिकम बेटर एट डायनेमिक प्रोग्रामिंग देन व्हाट ऑल थिंग्स आई नीड टू नो इन ऑर्डर टू डू दैट. और फिर मैंने उनको ब्रेक डाउन किया और छोटे टास्क में, और उसके अगेंस्ट मैंने एक 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 डेट दिया एंड आंख बंद करके मेहनत करने लगा. And slowly and steadily achieving those small targets made me realize that if you put your focus and determination into something, you will be able to do it. And मैं ये आप सबको कह रहा हूँ, whosoever is thinking, whosoever is doubting yourself कि शायद नहीं होगा, मैं हूँ ना, I'll help you in achieving your goals. Mention it in the comment below. Let's fulfill your dream. Whatever dream it is that you have. If you're liking the content till now, then hit the like button, share it among your friends and peers. Like target is 1,500 likes, and this is my Instagram ID. So जाके follow कीजिए, and we will have a good discussion there as well. Apart from this, I would also want to tell you about a new platform that Coding Ninja has created for its interview preparation purposes, and it is completely free, which is known as Code Studio. It has probably over 2000 प्रॉब्लम्स. कोड स्टूडियो के क्वेश्चंस में मैं जाके देख रहा हूँ और उसमें मतलब एक से बढ़कर एक अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है, प्रॉपरली टैग्ड क्वेश्चंस है, कंपनी टैग क्वेश्चंस है, सो दैट यू कैन बेनिफिट फ्रॉम कंपनी स्पेसिफिक प्रिपरेशंस. नॉट ओनली दिस, देयर आर मोर देन 600 interview experiences that are present inside Code Studio. If you are someone who is looking to practice and improve their problem solving skills and want a free platform, definitely you should check out Code Studio by Coding Ninjas. I will leave the link to that in the description below. Go ahead and check it out. Not only this, you will also get guided paths for DSA, competitive programming, operating systems, DBMS, system design, which will definitely help you in cracking all of these companies that I have listed down here. It's probably 4th semester में हमें ये पता चला हमारे सीनियर्स के साथ कि ऐसे Geeks for Geeks करके कोई साइट होती है. मतलब we were so late to the game of learning DSA, of understanding the core concepts of DSA, क्या करना है क्या नहीं करना है. मेरे को ये याद है, मैंने सेकेंड ईयर के होली में I practiced for the first time arrays from Geeks for Geeks. So to be honest, from resources point of view, I would say that in my second year as well as the years thereafter, for DSA purposes, I used a book which is known as Introductions to Data Structures and Algorithm by Corman. I agree कि वो book is a bit difficult. I totally agree that. However,
If you give some time to read through that book, they have explained the concepts in so much detail that you will really understand it. Correspondingly, for practicing and preparing, I also used, there are a couple of other books that I preferred. CTCI, which is basically cracking the coding interview. However, in the current scheme of things, I think cracking the coding interview is not sufficient. Just only doing that is not sufficient, but yes, that will definitely introduce you to the algorithmic world of interviewing. The other book that I bought and I have practiced from is Narasimha Karimunchi, Data Structures and Algorithms Made Easy. So I use that. Apart from that, there is another book that I have practiced from, and that is Elements of Programming Interview. And that is really awesome book. And I will probably link their PDFs in the description below for research purposes only. And apart from that, practice के लिए अगर live practice करनी है तो I personally felt कि Geeks for Geeks और LeetCode काफ़ी अच्छे websites है to practice live, and I use them thoroughly throughout my engineering as well as right now as well. However, उसके अलावा भी there are other websites like binarysearch.io that you can use, which provides you the peer-to-peer learning concept there, which can be very much helpful in order to study and learn programming. And yes, to be honest, LeetCode is more than sufficient. And कैसे आप LeetCode को अच्छे से use कर सकते हो to the fullest extent, I have already made a detailed video on that, so you can go ahead and watch it. The another thing that I did personally that helped me, so I had basically introduced the concept of making my own sheet, जिसमें जो भी problem, जो भी question मैं देखता था, which I was not able to do. Whatever that question is, I used to write it down in that particular sheet. I tried to understand the code, tried to understand as to why a piece of code was written, why an if condition is written, and if I do not write this if condition, how, or if I write this if condition, how it guarantees me a correct answer. तो मैं अपनी शीट बनाता था और उसमें वो सारे प्रॉब्लम्स मैंने लिखे जो मेरे को आते नहीं थे. 2 हफ्ते बाद वापस से वो सारे प्रॉब्लम्स मैंने उठाए, मैंने ट्राई किया प्रैक्टिस करने का, कुछ क्वेश्चंस हुआ, कुछ क्वेश्चंस नहीं हुआ. फिर से 2 हफ्ते बाद वापस से सेम रिविजन एक्टिविटी मैंने करा, एंड स्लोली एंड स्टेडली आई क्रिएटेड अ लिस्ट of all those different unique kind of problems that I personally face some issues with. It made me realize the type of questions that I find it difficult to answer, the type of question that I find difficult to understand, and made me target my practice, make me target my revision, my learnings according to my findings, fine tune it and improve. You are a unique candidate. Chart out your own path and walk on it. You will do much better rather than trying to copy someone else, because you are unique. I really hope that you are liking my content. If you are, then hit the like button, share it among your friends and peers, and subscribe to the channel if you have not already. The like target for this video is 1.5 thousand likes. Then please hit करो यार, like और share कर दो बहुत ज़्यादा. बाकी और कमेंट कीजिए नीचे धमाधम कि क्या क्या और अलग अलग वीडियोस चाहिए आपको मेरे तरफ से. I'll try my level best to bring the quality content for you guys. This is Soumyajit bidding goodbye. Das Vidanya.